सो बॉयज एंड गर्ल्स, मेरा नाम ट्रैश है, बात कर आप सभी का स्वागतम एक और ब्रांड न्यू सीरीज में। यार ये महीना पूरा का पूरा गेम का गया मुझे कहना पड़ेगा, बिकॉज हमने कुछ ही दिन पहले स्पाइडरमैन 2 की शुरुआत करी थी सीरीज की, जो कि अभी भी चल रही है, खत्म नहीं हुई है। एंड यहाँ पर चलते चलते एलन विक 2 की भी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है और इसी के साथ हम इसको खेलने भी वाले हैं। तो एलन विक 1 की बात करूँ तो मैंने इसको पूरी तरह फिनिश कभी नहीं करी उस गेम को, बट 2 डेफिनेटली काफ़ी अलग लग रही है गेम्स 1 से, और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इस गेम के लिए। दैट्स वाई मैं सुबह उठा हूँ यार, क्योंकि गेम 9:30 बजे अनलॉक हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड अभी हम जस्ट इसको शुरुआत करने वाले हैं। तो अगर आप इस सीरीज़ को एंजॉय करते हो, बराबर तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का है, जो कि इस चैनल को बहुत हेल्प करेगा बराबर तरीके से देवा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस खेल फ्रिकिंग दृश्य का बोर है एलन विक 2 बॉयज इन गर्ल्स। ये क्या ओनली गेम रिलेटेड, मुझे नहीं पता था ये नए अपडेट में आया नोटिफिकेशन ड्यूरिंग गेम्स, पहले था नहीं है। एपिक गेम्स से बाय द वे इस गेम को पब्लिश करी है, सारा सपोर्ट एपिक गेम्स ने दिया है जो भी डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है। एक्चुअली प्रोड्यूसर की तरह काम करिए यहाँ पर। भाई साहब, कोई भी यहाँ पर इन लाइसेंस एग्रीमेंट पढ़ता भी है, आई मीन इसमें कुछ सेंसिटिव रहता है और हम मिस करते कभी, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ हो सकती है। फोटो सेंसिटिविटी वार्निंग, ओके बराबर आप SDR, डेफिनेटली SDR पे हम खेलेंगे। तो इस गेम के ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा कमाल के, जो भी मैंने डिजिटल फाउंड्री का किसी की भी वीडियो देखे हैं, तो हम इसको क्वालिटी में ही रखने वाले। परफॉर्मेंस में भी बाद में टेस्ट करें, बट अभी राइट नाउ क्वालिटी में हम इस गेम को खेलने वाले हैं। देखते कैसा रहता है इसका साउंड डिज़ाइन, मैंने सिर्फ अच्छी चीज़ें सुनी है और कुछ नहीं। ग्राफिक्स कंट्रोलर एम असिस्ट डेफिनेटली चाहिए 30 FPS में। आई मीन एम करना इज रियली हार्ड बाय द वे। मोशन ब्लर, फिल्म ग्रीन दोनों रखते हैं। फिल्म ग्रीन पसंद नहीं, मोशन ब्लर रखते हैं बस। बेस रिडक्शन नहीं। मोनो ऑडियो, डायलॉग वाइब्रेशन इंटेंसिटी, और जल्दी बैटरी खाएगा इसी के साथ। स्पीकर नेम इन सबटाइटल्स फॉर श्योर, बैकग्राउंड रहना चाहिए बराबर तरीके से। डॉट क्रॉस हेयर, शो डॉट व्हेन पिकिंग अप आइटम्स। न्यूडिटी सेंसर, न्यूडिटी इस गेम में मुझे नहीं पता था यार, तो सेंसर करते हैं। मुझे लगता नहीं उतनी कमाल की न्यूडिटी इसमें होगी, तो आई थिंक कि ऐसा करते हैं हम, ठीक है। कॉस्मेटिक्स, रिवॉल्वर स्किन, ओके सब कुछ बढ़िया। तो शुरू करते हैं बॉयज इन गर्ल्स। स्टोरी एंड नॉर्मल एंड हार्ड डिफिकल्टी, अब लोग नॉर्मल ही खेलने वाले देवा। इवन तो ये गेम हार्ड होने वाली। कंट्रोल मुझे याद है, लाइक मैंने सीरीज भी उसकी निकाली यहाँ पर, उस गेम ने मुझे बहुत दिक्कत दी थी, और सही में वो गेम हार्ड है। We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. मत कहना गेम की शुरुआत हो गई है। तेरी मजाक नहीं बॉयज,
अच्छा इसी न्यूडिटी की बात कर रहे थे क्या वो लोग? तो बॉयज इन गेम्स गेम की शुरुआत हो गई यहाँ पर। एलन वेक 2 में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मेरे सामने एक नंगा मोटा आदमी चलता हुआ और जिसको कंट्रोल कर रहा हूँ मैं। भाई देखो एक चीज़ मुझे बस देखनी है, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ यहाँ पर। कुछ कॉपीराइट म्यूजिक का मैंने देखा था क्या? डायलॉग वॉल्यूम डेफिनेटली 120%, नथिंग। God damn, bro. ऐसे एलन विक की आवाज तो लग नहीं रही है। टैमी कौन, मुझे देखो मैं यहाँ पर नंगा घूम रहा हूँ, कपड़े की दरकार है यहाँ पर। ऑलरेडी कौन, क्या ये एलन विक तो नहीं है? मतलब ओल्ड वाला, मतलब फ्यूचर के बाद सीन क्या है? भाई देखिए ये गेम सही में डरावनी है, नॉट गonna lie। इवन तो मैं इतने आसानी से डरता नहीं हूँ, बिकॉज मैंने काफ़ी मूवीज़ एंड काफ़ी गेम्स खेले हैं, और उनमें से एक गेम जिसने मुझे सबसे ज़्यादा डराया है, जो आपको भी पता है, मे भी आपको ना पता हो, आप गेस कर सकते हो, वो आउटलास्ट है। बिकॉज आउटलास्ट एक ऐसी गेम है, बड़े से बड़ा प्लेयर हिल जाएगा खेल के उस गेम को, विदाउट एनी डाउट। बॉयज इन गेम्स झटके पड़ रहे हैं यहाँ पर एलन वेक के। तो अगर मैं न्यूडिटी सेंसर ऑन रखता तो क्या ये पैंट पे घूम रहा होता अभी? है वी गो, ये स्प्रिंट भी करता है। लेट्स गो। ग्राफिक्स काफी अच्छा लग रहा है यार, एंड ये नेक्स्ट जेन ओनली गेम है, सो अच्छे होने भी चाहिए। क्या ये लड़ेगा अब ये नंगा बंदा? आई डोंट नो, मे बी। ये नेक्स्ट जेन होके भी इसके जो प्राइस रखे हैं ना इन्होंने, काफ़ी सही रखे हैं एक्चुअली। लाइक ये गेम बड़ी है बट ये चार्ज ज़्यादा नहीं कर रही है। लाइक आजकल की गेम्स 5000 कर रहे हैं चार्ज, बट एलन वेक 2 5000 चार्ज नहीं कर रही है। आप आराम से उसको 300 या 300 रुपये या 50 में खेल सकते हो, 350 में। वे जंप नहीं करता ये, मे भी हमें यहाँ से जाना ही नहीं है। डूडी मोटे आदमी का अंत होने वाला ऐसा लग रहा है। या मुझे लाइट में जाना चाहिए था। हंटिंग सीजन। इस बेचारे को मरने के लिए हमें यहाँ पर रखा था। हमने खेला ये देखने के लिए, आई मीन गेम हमें दिखाना चाहते हैं किस तरह ये लोग खत्म करते हैं ये कल्ट। वैसे तो ये भूत ही है। डूड इस मोटे आदमी को छील डाला है यहाँ पर, छाती उसकी फाड़ी ताकि उसका दिल निकाल पाए। क्या ये गॉड ऑफ वॉर स्टफ क्या हो रहा है? क्रेटोस है क्या वो? आई मीन मैच नहीं करता यहाँ पर, बट गॉड डैम क्या था ये? एंडी कचौड़ी एलन वेक 2। एलन उठ नहीं गए। बाय द वे रेमेडी गेम्स काफी मूवी टाइप होते हैं, लाइक शुरुआत जब होती है, एंड दैट्स मुझे पसंद है ये चीज। How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right.
Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Dude, काफी अच्छी लग रही है मुझे स्टार्टिंग by the way. That another body turns up just as we arrive in town, Some family moments. leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. By the way, किसी ने पहचाना You should इनकी आवाज को? think of me as the backup. Max freaking Payne. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Dude, बहुत कुछ सब कुछ हाई क्वालिटी लग रहा है मेरे को, मतलब बराबर तरीके से आप देख सकते हो इनके. Cauldron Lake. Time to get to work. मोशन कैप्चर मैन. मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ बराबर जाए बिकॉज एक 1 GB का अपडेट भी आया इस गेम के जस्ट 1 घंटे पहले. The deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. ये मुझे मस्त लगता है इनका ये तरीका दिखाने का. कुछ भी चैप्टर 1 या रिटर्न 1 इनविटेशन न्योता. The map displays key location in the area. गोल्स भी यहाँ पर गेट टू द क्राइम सीन, फाइंड द डेप्यूटीज. क्या वो वन ऑफ द डेप्यूटी था जिसका छाती फाड़ा इन्होंने? Here's someone. Could be our deputy. I can go take a look. वो तो अच्छी बात है कि हम लोग सुबह के टाइम में आए, थोड़ा सा डे लाइट है, मे बी इवनिंग है. कॉल्ड्रन लेक राइट में. कॉल्ड्रन लेक मुझे याद है, ये एलन वेक की जगह है. Sheriff Baker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, that, Those damn feds gonna show up, Mulligan. federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? And if it, I could use a briefing. Yeah. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. Oh, वही हुआ है मतलब जो हमने देखा. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, पता है. inside. बस इतना ही, लाइक हमने देखा है ये कि ब्रीफिंग यही थी. Were there any witnesses? Yeah, couple out-of-towners. I wonder Yo, what they were Max. doing sneaking around the woods at night. I mentioned the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Baker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. मीट डेप्यूटी थॉर्नटन जो Before we get to the बड़ा crime एक्साइटेड scene, है. to review the facts of the case so far. चलते हैं. Make sure I'm seeing the clues clearly.
Wow, you can access the case board inside the mind place. ये कितना सही है, मैं ऑलरेडी रीड करके बता सकता हूँ. Mind place. Technique to sift through clues and work the case, building the mind place again for each case, using each field office as a model in my head. तो ये मेरे सर की कहानी है. सॉरी, दिमाग की कहानी है. यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. उनको सॉल्व करने की मैं कोशिश कर सकता हूँ. ये हिसाब है. The Cauldron Lake Murders. The case board is a mental technique that allows Saga to analyze clues and progress the investigation. बढ़िया बढ़िया. Slight difference in murders, bloating only commonality in bodies, but not cause of death. Chest trauma, exposure to water, postmortem. ये हाँ, ये उसी का पोस्टमार्टम कर रखा है इन्होंने. बाय द फ्रिकिंग वे, यू आर नाउ फ्री टू नेविगेट अगेन. इसमें कोई हैंड होल्डिंग नहीं इन गेम्स में. ये सबसे कमाल की बात होती है. वन ऑफ द कमाल की बात है. टॉक टू समवन. ठीक है. was covered in illegible tattoos. A message from the killer maybe, or their aunt. Killer may be a sportsman or a hunter. Most probably वो hunter है. All victims reported missing in 2010. No other commonality. 2010 में तो एलन वेक निकली थी. ये मेरा मैप है. To Tet Lane dentist. Bloating, bruising on the wrist. Wendy Davis, teacher, body bloated, large chest wound. Store owner, heart removed. सबका यहाँ पर एक ही चीज़ कॉमन है, लाइक हम देख के बता सकते हैं. दिल निकाला गया है. All bodies experience bloating. भाई साहब, इसकी तो फिर भी यहाँ पर हमें फोटो मिली है. भयंकर चीज़ है मैन. ठीक है. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. ये एक और इंटरेस्टिंग बात है. Visiting the mind place does not pause the game, so be mindful of nearby threats. तो मतलब मैं अगर अपने दिमाग में हूँ भी तो वहाँ पर मर जाऊँगा. तो मतलब आप कभी भी नहीं कर सकते, अपने माइंड प्लेस को खोल नहीं सकते, एक्सेस नहीं कर सकते. टेक्निकली आप कर सकते हो, बट आपको लाइक गाड़ी आ रही है, आपने दिमाग में सोचने लगा दी, जोर लगा दिया आपने, गेम खत्म मैन उधर ही. Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Mirror Peak. The mighty mountain in the distance is no other than Mirror, the iconic landmark overlooking Cauldron Lake. क्या ये रियल में है? पता नहीं. From the right angle, its beauty will be reflected on the calm surface of the lake, mirrored in all its inverted glory. Okay. बड़ा ग्लूमी है, बट यही तो कमाल का लग रहा है. किसी भी हॉरर मूवी की शुरुआत अगर ऐसे हो ना, तो वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग बना देती है मूवी को. एटलीस्ट फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और उसके बाद मूवी को कैरी करने का रहता है. एक रिसेंटली मैंने काफ़ी एक कमाल की हॉरर मूवी देखी थी, अगर आपको पता होगा शायद, उसका नाम स्माइल. भाई साहब वो मूवी मैंने उसकी स्टार्टिंग की बड़ी कमाल की थी. If getting back to nature is your thing. It's raining or what? Lol. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. जनरल स्टोर लेफ्ट में, मे बी सामने से लेफ्ट. थॉर्नटन की आवाज आ रही है ऑलरेडी.
Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. क्या कर ले बात पैंड पोड़ Stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. डूड क्या हम सेंसर ऑन कर सकते हैं अभी अगर हम चाहे तो अभी राइट नाउ गेम के वक्त नहीं आप नहीं कर सकते सिंगल टैप वर्क है यू कैन अच्छा This fit the MO of the previous. oh no okay we go एग्ज दबाना है मेरे को Positioned on the table. Ritualistic. You unlock the first key image you can place it on the caseboard inside the mind place मैं लगा सकता हूँ कहाँ पर नहीं भी to see activity clues the key image can be selected X place on the caseboard अच्छा clues Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Placing a key image on the caseboard begins a new line of investigation. अच्छा Another body has been found in the woods near Bright Falls. Perfect timing. ये वही है ये भी डेप्यूटी एक तरह से if I'm not wrong. यहाँ पर क्या लिखा है Consistent with previous murders या सबकी छाती को बराबर तरीके से चीरा गया है ताकि निकाला जाए दिल को भाई यहाँ पर यू आर नाउ फ्री टू एग्जामाइन और लीव अगे लीव करते हैं देख रहे हो दिल को भी इधर ही रख दिया रे देवा Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. जिसको बाहर रख दिया गया ऐसे Body. भाई straps Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. कितना कूल है यार ये कैसा लगा उसको भी हार्ट फाउंड हियर विक्टिम्स बॉडी Doesn't make sense. वेट अच्छा मुझे रखना पड़ेगा ना वैसे मैं रख क्यों नहीं पा रहा इसे है Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. The clues have resolved the open question and unlocked a deduction. As you advance the investigation, new questions will be unlocked, updating your goals. You can check the updated goals by pressing triangle. Learn more about the victim, more about the killer. You can now free. अच्छा, you are now free. यहाँ पर क्या लिखा है? Murder matches previous cases but interrupted. May find some new leads this time. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. तो ये वो मोटू था
Clues can be discovered by speaking to your to people as well as your examining your surroundings. Oh, वहाँ पर एक और clue है. Multiple people were here. Multiple killers? Definitely सही पकड़ा है सागा ने यहाँ पर. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. And 2010 में ही एलन वेग भी आया था यहाँ पर. What happened after he got So fired? what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts. And that's उसने weight भी काफी gain कर लिया. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Yeah, that's for sure, man. तो चलते अपने माइंड स्पेस में चलते हैं. क्या हमें बहुत सारे क्लूज मिले हैं. केसी नाइटिंगेल, ये तो मैक्स पेन लग रहा है मैन. आई मीन ये तो हमारे बगल में ही है. केसी ने कहा है नाइटिंगेल वेंट ऑफ द डीप एंड FBI फायर्ड हिम. ये रूमर के अकॉर्डिंग है. मल्टीपल सेट्स ऑफ फुटप्रिंट्स पहले इसको लगा लेते हैं. द किलर्स. विक्टिम इज रॉबर्ट नाइटिंगेल. फॉर लेटर. Okay. No one heard from this guy in 13 years. Why surface now? 2023 में लौट रहे दे भैया. Robert Nightingale, कितना cool है यार ये. ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Former FBI agent. Mental state questionable at time of disappearance. वैसे मेंटल स्पेस में और क्या क्या है? लेट मी चेक. बहुत कुछ है यहाँ पर यार. देख रहे हो यहाँ पर कुछ देखा ना मैंने यहाँ पर. ओह, The mile-high strangler case. सागा एंडरसन. Heard of that one. Meritorious achievement to agent. Okay, that's cool, man. Was he killed here or brought here after? For display. और क्या यहाँ पर है जो हमारे काम आ सकता है? अभी तक हमें पता नहीं चला है. लर्न मोर अबाउट द किलर. अभी तक चीजें बची हैं जानने. Large amount of blood on the table. ओ ये भी नहीं देखा मैंने. The victim died here. I think that's everything. ओके, इसको भी डाल देते हैं. विक्टिम में जाएगा ये. किलर सॉरी. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. मल्टीपल असाइलेंट्स प्रेजेंट्स. डेफिनेटली देखा हमने. उसी टाइम देखा था काफी लोग मिल के पेलन दृष्टिकोण कर रहे थे. बहुत ही गलत मैन. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Victim came from Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide उनके हिसाब से सोचना. revelation. डूड यही तो होते हैं ना एजेंट्स लोग. यही तो यूज करते हैं. इन्होंने ये
हमें यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस में दिखाया है, फिजिकल फॉर्म में. यू कैन यूज प्रोफाइलिंग इनसाइड सागा's माइंड प्लेस टू गेट इनसाइड द हेड ऑफ सस्पेक्ट्स एंड विक्टिम्स. ब्रो ये कूल नहीं है? कुछ ज़्यादा कूल एलिमेंट्स नहीं है यहाँ पर. मिसिंग पर्सन, रिचुअल मर्डर. मिसिंग पर्सन देखते पहले. Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. God damn. Okay, buddy. टू प्रोफाइलिंग मुझे कूल लगी यहाँ पर. ये क्या है वैसे? This mug always cheers me up. Not the worst, mom. So nice. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. मजाक नहीं, सही में यार. Get out. कितना बड़ा पेड़ है यार ये. हमें अंदर जाना है क्या? नहीं, क्लूज देखने यहाँ पर. तो एक और बात है, वो जो जहाँ शुरुआत हुई इस गेम प्ले की, लाइक वो नंगा पड़ा हुआ था, ठीक है, किसी जगह पे. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page,
or the killers left it for us. टाइम इनको पता था हम यहाँ पर आने वाले हैं. This page. इन्हें पता है हम यहाँ पर हैं एक्चुअली. एंड एलन वेक भी यहाँ पर आया. बहुत चीज़ें चलने वाली यहाँ पर. क्या है वो? मैन्युस्क्रिप्ट पेजेस, प्रोफाइलिंग. एक और यहाँ पर आ गया ना हिस्सा. पेज. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. मतलब दिल निकाल के कुछ और रख दिया. ये स्टफ है. मैन्युस्क्रिप्ट पेजेस. The message. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Footprints emerging from under the rock victims came from. Yeah. He walked through a bolt that doesn't make sense. Trail has gone cold. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Asking wrong questions. Huh. Hidden inside of him, yeah. Reading the words, these words felt like a message to someone playing a game with them. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Learned all I can hear? Acha, okay. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? वैसे यहाँ पर क्या है? क्या हम जा सकते हैं यहाँ पे? Dude, जा भी सकते हैं. Definitely उठ गए हम लोग. हाँ. It's all about control. Deciding what happens to Whoa, क्या मुझे एक्सप्लोर करना भी चाहिए अकेले? Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. हाँ, ये तो ऑलरेडी creepy है कितना. The witch's hurt. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. अच्छा बॉडी ले गए वो लोग. यहाँ से शॉर्टकट था एक्चुअली. हाँ. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? Cheating. It's a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. The field authority saw movement in the bushes, footprints around the area. तो वो जर्नल भी लिखता था. Oh my god. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Huh. I'll be back in a second. Roger.
आस्क डेप्यूटी टू मूव द बॉडी. यहाँ पर यहीं पर बॉडी थी ना. अच्छा ये अलग जगह है ना. आई सी नाउ. दिस इज डिफरेंट बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है चलते हैं डेप्यूटी के पास चलते हैं. अभी थोड़ा एक्सप्लोर करना सही नहीं होएगा. बाद में देखते हैं चक्कर क्या है. अभी उसे बोलते हैं मूव करने के लिए. वो ये क्या है. Yeah, we made it back. एक और क्लू. A creepy twig sculpture? Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. बेचारे को मार के इधर ट्रॉफी की तरह रखा हुआ है रे देवा. क्रेजी मैन. वो ये सिंबल. एक और सिंबल. They say, let this be a warning to you, fellow trespassers. They say the lake is a caldera, something found by a eruptive volcano. Or the sinkholes it leaves in its wake. But what if that's not true? What if it's something else, something less natural, much more man-made? I say the lake's not formed, it's designed, and it has a purpose. The lake is a hiding place. Beneath the calm surface lies a secret machinery ready to be activated at the press of a button. And the people with the button, they are in that big house by the lake, preparing, I know it. First drawing, water line, real caldera is made from a lava. Second drawing, strange machines. अच्छा इस नोट्स में ये सिंबल क्या है देवा. हर जगह देख रहे हैं अपन. Did you get lost, Anderson? Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. शॉर्टकट की मतलब दरवाजा यहाँ पर लॉक है शॉर्टकट के लिए. टेक द कार बैक टू द ब्राइट फॉल्स. लेट्स गो. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. ओ ये वाला ना. अच्छा ये टोटली रेसिडेंट इविल की तरह है. इसका इन्वेंटरी मेन्यू. कूल Seems like a माइन. nice town so far. मुझे रेसिडेंट इविल पसंद है. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. ऑलरेडी कितना क्रीपी वाइब्स हैं यहाँ पर यार. रात के टाइम में क्या लगता हुआ ये फट के हाथ में आ जाते होगे. डेफिनेटली मैन. Tripod. नहीं मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी मुझे इमेजिन करने की कोशिश करने की दरकार भी नहीं है. मैं फील कर सकता हूँ मैं. Snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. एक और शॉर्टकट सेम मास्टर की है ना. ये हर जगह यूज हो रही है. मास्टर की बोलते देवियों एंड सज्जनों. हाइकिंग यहीं से जाने बोला था ना उस पुलिस वाले ने. हाँ. ब्रो
कहाँ गया वो केसी? अच्छा लेफ्ट में चला गया। Here we are. दोनों रास्ते वैसे एक ही जगह पे मीट करते हैं सो। Diner. अच्छा हमारी गाड़ी तो ये है। गेम इंस्टॉल इन प्रोग्रेस। गेम अभी तो पूरी तरह इंस्टॉल नहीं हुई है, दैट्स व्हाई जा नहीं पा रहे हैं, तो 8 मिनट टोटली लगेगा। I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. यार टाइम थ्रिल्ड ना, रात का टाइम आने दो सारी चीजें निकल जाएगी। I mean, किसी की भी निकलेगी मैन। ये कौन है यार? थोड़ा मैन। No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Desert, sorry, dearest, sorry, dear fest है यहाँ पर। There we go. वो किस तरह मस्त नाचते हुए। The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. Dude, ये डांस हो जाए। No coffee. ब्राइट फॉल्स वॉशिंगटन। हाँ Have you had today? अच्छा कॉफी है। ओ डियर डायना को प्रमोट कर रहे हैं लोग। हाँ? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Never enough coffee. Oh dear. Cute. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's... Hey, क्वांटम ब्रेक, इसका नाम क्या था यार? क्वांटम ब्रेक को भूल गया मैं। Nice to meet you, Sheriff. शरीफ ब्रेकर है I'm set for इसका नाम। You know what? इस बंदे को मैंने लास्ट देखा था I'm Agent Saga Anderson. बॉयज में लैंप लाइटर है। Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. मैं सरप्राइज हो गया था देख के। We could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. सस। Mulligan and Thornton are still on about that? No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the victims? कौन यहाँ पर सस्पेक्ट है? Sure. But it's slowed down ever since... I don't know. Guess. एक्सप्लोर करते हैं देवा। Spiked around 2010. Hey, The fence was built the jukebox is out of order. Huh? Yeah, that's exactly right. Can't believe that happened. Stuff that I can take sick. कि यहाँ पर भी है, काफी सिग्नेचर है। यहाँ पर डियर बहुत लोगों को पसंद है। अरे बाप रे क्या किया मैंने ये। यहाँ पर डियर बहुत लोगों को पसंद है यार। ब्राइट फॉल्स का मैप। लेट्स गो बेबी। I need a tool to get this open. मुझे लगता नहीं इसके ओनर से बात करके चाबी लेके खोलना चाहिए। टूल्स बोला, उसे तोड़ने की बात करी है। ये तो टॉयलेट है, यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो। एम्प्लॉयज ओनली। वैसे ही एग्जिट है यहाँ से। हम आई गेस मुझे याद है हम एलन वेक के साथ भी इस जगह पे आए थे। आर यू द बुकर्स? Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. टैमी। Hello, officer. Just Saga. डूड इनकी आवाज आई थी So, मतलब are जब we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scrape Yeah. pillows, that kind of thing. We're not charging you.
I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? Can I sit, by the way? I'm a Like, writer. खड़े True crime. पूछना पड़ेगा देवा. Doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake getting some details. Perfect. Alan Wake, bruh. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and No, इन्होंने देखा था. he was acting crazy, shouting weird shit at us. Yeah. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives. वो इन्होंने सारा देखा. Some kind of फिर इनकी आवाज में सुन पा रहा था. cult. पर मैंने ध्यान नहीं दिया था. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out the whole Dude, thing. बताया नहीं. Come on, man. ऐसे ये तो इन्होंने blank रख दिया, dude. Cult of the tree. Profiling. You know what? ये पर ही मैं करूँगा profiling. Deduction available. How can you be so calm? Corpses are part of the job. The cult of the tree. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. जो कि definitely उन्होंने दिया नहीं. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. The book has described multiple attackers wearing deer masks, chanting "Tear into the guy." Wild tearing into the guy. ये कहाँ डालूं मैं यार? ये कहाँ जा सकता है? क्या profile? Case closed. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Okay, I mean अच्छा ये वाला केस क्लोज है, मतलब पूरी तरह से नहीं, अभी तक हमें मिला नहीं है बहुत चीज़ें. Background cases accumulate clues about broader ongoing topics. Cult of the tree. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Cult कोल किस टाइप का कल्ट है ये? डियर के फैंस हैं, नॉट गना लाई. That's for डियर मास्क पहनते हैं. Cult psychology. If they are hiding their faces, they are not stabilized enough to operate openly. Connection to the Dio Fest. Find evidence. नहीं, यहाँ पर नहीं है. ये I guess cult gold नहीं है. Gold नहीं होगा. Cult symbols. What's the purpose? Marking territory. A warning feels territive like something out of a horror movie. Okay. अबे by the way यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो मैंने देखनी है. Map. Remember, you can quick access the map without entering the mind place. Oh. Cool. और कौन है? विटनेस में वो लोग ही हैं. आई डोंट थिंक सो और कोई है. So you found something there, right? A
A necklace these cultists may have dropped. How do you know? ऐसा बोलेगी. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Dude, ये क्या फ्यूचर से आई है? I mean, एलन वेक की तरह. उसे कैसे पता वैसे? So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. How? मैं तो जानता भी नहीं, सच बताओ तो अभी जैसे कि बता रही है सागा. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. मोशन कैप्चर बहुत इम्प्रूव हुआ है कंट्रोल से. ये चीज़ तुमने हमें कहनी पड़ेगी. बस इतना ही. वेट अ मिनट. मुझे पता कैसे रे देवा. अच्छा, हम प्रोफाइलिंग नहीं कर सकते हम, बट हमारे पास एक क्लू है अभी के लिए. कर्ल्ड नेकलेस. Jewelry can be used as a subtle indicator of membership, but this isn't subtle. A badge of pride. Main case और ये चल रहा है Cauldron Lake murders. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. शेरिफ ऑफिस जाते हुए हम यहाँ पर इसी के साथ. Let's go. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. But बहुत सच्चाई नहीं थी उन बातों में. Damn. Go to the morgue's examination room. Downstairs ready to go. Okay, Mulligan. In the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, lead the way. Sorry, मैं क्यों जा रहा हूँ? Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. See you around.
So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. जोड़ यहाँ पर अंधकार है यार, लाइट वाइट ऑन नहीं करते कई लोग। Okay. यहीं पर लाइट है बस। बाप रे बाप। I'll start with the external inspection before performing the internal examination. ग्लव्स किधर है, ग्लव्स किधर है? What was the cause of death? ओके कोई नहीं, हमें देखना है बस। What other clues can the body? ब्लोटिंग हुआ है ना यहाँ पर। Shows signs of being submerged in water post-mortem. बहुत सारी फूल गया बंदा। Doesn't add up. There's writing on here. क्या लिखा है? Can't make it out. बाद में देखते हैं। How'd they manage that? दिल में लिखा हो रहा था, कैसे रे? बहुत ही A tattoo? skillful hands हैं। Strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. देखते हैं अब क्या रखा है इन्होंने। Examination of Robert Nightingale. Time to see what Nightingale's body can tell. यही नाम है ना इसका, रॉबर्ट नाइटिंगेल। Anything to learn from the body? बहुत कुछ है यार। Like first of all, ये wound. Body has been prepped, ready for examination. Hope it answers. Okay. Ooh. Cause of death. Something visible inside. क्या but? Something was put in there. Smudged text under victim's skin. Nope. क्यों यहाँ पर जाएगा? वेट, वहाँ पर वो सारी चीज़ें थी ना। विक्टिम केम फ्रॉम, नहीं यहाँ पर नहीं। द किलर्स, Okay. फूल सा गया बॉडी में। Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. How did killers have time? सही बात है यार, क्या सीन है। There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Chest trauma is clear cause of death. Cause of bloating unknown. Strange tattoos on skin and hurt. Something was inserted into the chest cavity. But क्या समझ नहीं आ रहा। Oh my god, ये डेफिनेटली यहाँ पर आने वाला है। एज रेस्ट्रिक्शन मैन। सेंसर ऑन करना चाहिए था, इसी के साथ पता चलता है। It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here.
ये क्या हुआ? Sheriff? बंदा गायब हो गया। हो तेरी, इसने क्या कहा? शो मी द क्लिकर। ओह ये डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है मैन, हल्के वो भी। Dude, he came back from dead. Could not see into bright light. उसको पोजेस कर लिया उन्होंने, उसके पास दिल नहीं है, वो जिंदा है। समझ रहे हो वो क्या सीन चल रहा है यहाँ पर? No weapon. The page said to get into the light. Oh my god, on दृष्टिकोण. Try to stay in the light to avoid being detected by enemies. Okay, ये तो काफी कॉमन फंडा है। Get into the light. Now. Dude, ये लाइट नहीं है। Safe havens will restore some of your health. If you leave or attack from a safe haven while in combat, it will become temporarily unavailable. What is this? Safe haven? वो लिया ही नहीं मैंने। अबे लिया ही नहीं मैंने। My gun's out in the hall. Gotta get it. Oh no. Bro, ये क्या सीन है? Dude, मार दिया? Dude, मार दिया? रिपीट कर रहा हूँ मैं? ये क्या हुआ यार? हाँ मुझे पता है मैं लाइट में नहीं था, बट मेरे पास टॉर्च थी मैन। Dude, ये सीन फिर प्ले होएगा? टाइम। तो वो लाइट में तो कुछ नहीं कर सकता ना मुझे, या कर सकता है? गेट आउट ऑफ माई हाउस। He can't see me in the light. ओह ये चक्कर है। हाँ Gun's out in the hall. Gotta get it back. Dude, वो safe havens will restore some of your health if you leave or attack from a safe। हमने पढ़ा था ये। Gotta move. Now. Dude, मुझे वो हेल्थ चाहिए थी, बट कोई नहीं, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। Here we go, मुझे गन मिल गई। अब आया कॉम्बैट का मजा। Dude, मार दिया। Vanished. End of chapter 1। प्रो फट के हाथ में आ गई मान। आई मीन डेफिनेटली उतनी नहीं आई, बट इंटेंस था ये। अगर ये कॉपीराइटेड म्यूजिक है तो मुझे नहीं पता है यहाँ पे सीन क्या होएगा मेरे साथ। ये डेफिनेटली कॉपीराइटेड है मैन। गाना कमाल का बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने म्यूट करी है तो एक कमाल की सीरीज की शुरुआत हो रही है। एलन वेक 2 का। गंदम, ये गाना बहुत कमाल का नहीं है? मुझे पता आप सुन नहीं पा रहे, बट क्या ही कर सकता है यार। है कैसे इंट्रो है ना? मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये कॉपीराइटेड है म्यूजिक, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। मुझे लगता नहीं है फ्री में सुन सकते हैं हम इस गाने को।
मुझे लगा गाना खत्म होने वाला था। बड़ी गाना कुछ ज्यादा ही अच्छा है यार, मुझे नहीं पता है कौन सा है। डेफिनेटली मैं इसके एल्बम को चेक करने वाला हूँ, एलन वेक 2 के। ये बहुत सही है, बहुत ज्यादा सही है। आप समझ नहीं पा रहे हो, बट आप बेबी आपको ये स्पॉटिफाई मिल जाएगा तो आप सुन सकते हो उस गाने को। बहुत ही शानदार है एक्चुअली यार, ये एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। देवा रपारप चे। मेरा बस यही क्वेश्चन है कि हर चैप्टर के बाद ऐसा कुछ आउटरो होगा क्या, लेकिन अगर होता है तो कूल रहेगा, नॉट गोना लाए। कमाल की बात है जो कि, तो एक दोबारा ही पड़ेगा वे। ओके, हमने पूरा गाना सुना एंड राइट नाउ यहाँ से शुरुआत होगी चैप्टर 2 But he की। still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just बट इस एपिसोड को हम ये पर रखने वाले हैं, तो मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। एक इंटेंस और एक काफी मिक्स फीलिंग है यहाँ पर, मैं कहना चाहूंगा। कमाल का एक्सपीरियंस रहा है। मिक्स फीलिंग इन द सेंस काफी क्वेश्चन है, हमें केस के बारे में कुछ नहीं पता, जो कि पता चलेगा धीरे धीरे, अनरेवल होगी सारी चीजें। अभी हमने थोड़ा सा मैकेनिक देखा, इवन टॉर्च वाला मैकेनिक तो देखा ही नहीं हमने, जो कि एलन वे का सिग्नेचर है। वो मे बी नेक्स्ट एपिसोड में देखें, मे बी नहीं, डेफिनेटली हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो मिलते हैं यार दूसरे बराबर से एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में।